Yeah, so kids, hi. Good morning, everyone. Recording in So my name progress. is Atif, and I'm working for WhiteHat Jr. So I welcome all the students of Emmanuel Mission School to this coding world of WhiteHat Jr. Okay, so students, what we are going to do today, we are going to understand what is coding, how it is connected to us, and how apart from how it is connected to us, we are also going to understand how important it is and how helpful it is. Okay, how it is going to help us. So we are going to understand that also. So moving ahead, just yeah. So moving ahead, as you can see over here, this is a cartoon type to the hand twisted and leg twisted. इसका हाथ भी twisted है, इसका leg भी twisted है. So ये जो है this cartoon, it is not exactly a cartoon, it is a robot, and we call it as Ro. Okay, so he lives inside the coding world since day one. Okay, so earlier he used to see that the people are making applications. The big people are making applications. They are making games, right? So once, so but in the recent time, what we have just observed that small kids are also making application, learning coding, making games, right? So he came up to me and he said that let's walk together, okay? Let's walk together and we will start making games and application together. Okay, so from now onwards, so what we are going to do, we are going to work together so that we can make applications, we can make games together. Okay, so yeah. So now moving ahead, as you can see over here, it is mentioned as today's agenda. So what we are going to do today, so we will start as we have started very late. So first we are going to do a workshop with our teacher. So there is a teacher who will be joining like within a few minutes. So we are going to do a workshop with the teacher. So she is going to present a demo. She's going to make an application with you all. Okay, so can you scan some can every all the student can tell me have you joined from your mobile phone or from your laptop? आप लोग ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है या मोबाइल फोन से ज्वाइन किया है? Okay, okay, so you have joined from your mobile phone. All right. So ma'am is going to present a workshop in front of you. Okay. So a demo, basically it's a demo. She is going to make an application. So while she's making the application, you have to just observe what she's doing, how she is making the application. Okay. And after that, we are going to understand what is coding and what are the importance of coding. Then we are also going to understand why the junior school Edge program. And at the last, we are going to take the question and answer. If you have any doubt, if you have any query, we are going to take that. Okay, so just give me a moment. I will just ask the teacher to join the session. In the meanwhile, just watch this video, which is very informative and very interesting. Does your school teach the language of the future? Does your teaching style help students develop critical, analytical, and coding skills? In the new economy, the workforce will not just communicate in English, Spanish, or Hindi, it will communicate in code. And computer science will no longer remain an optional skill, it will become a basic skill. Wouldn't it be great if you could teach your students coding in a format that is structured and highly engaging? WhiteHat Jr. has taught more than 1 million children with the world's first structured coding curriculum. Our kids have built more than 100,000 Play Store ready apps. Teaching young learners coding with WhiteHat Jr. will enhance their creativity, logical thinking, and problem-solving abilities. Your students can become certified developers too. Join hands with WhiteHat Jr. and give your school the edge in coding. Wonderful. Yes, Miss Parul, please join us. I've started a session. Yeah, so the teacher is joining. So as you have just heard that it was saying that coding is going to become a future language. Yeah, so ma'am has just joined, so I will hand it over to the teacher.
Okay, so she will share the screen and she will she will share the screen and she will make just a second, yeah. So she will share the screen and she will show you the demo, the application. She's going to print the application in front of you. Okay. So if you have any doubt, any query, just ask to her. She will definitely assist you for the same. Yeah, Ms. Parul, I hand it over to you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Sir, just give me a minute till I set up and share my screen. So meanwhile, if like they can wait just a minute. I'm just Sure, sharing my screen. Yeah, I'm sure. sure, definitely. So is my screen visible? No, ma'am. It's not visible. Yes, sir. So everybody, can you all see my screen, बच्चों? Yes, ma'am. Now it's visible. Yes, ma'am. तो गुड मॉर्निंग. आज हम लोग सीखेंगे एक एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको करने के पहले क्या हम सबको पता है कि कोडिंग क्या होती है? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो. ठीक है, तो आज हम लोग बनाएंगे एक शिप. ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं code.org. this this is this is code.org जिसपे हम लोग अपनी ये एक्टिविटी करेंगे आज. और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, ये हमारा डिस्प्ले है. मतलब ये आपका मोबाइल सिमुलेटर टाइप है जहाँ पे आप अपना आउटपुट देख सकते हो. जो आप बना रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये जो बॉय है सेंटर में वो आपका पूरा ड्राइंग बनाएगा. इसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं. ठीक है, अब नीचे एक रन का बटन है. ये रन का बटन इसलिए ताकि जब हम इस पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली रन करे और हम देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी चल रही है कि नहीं. फिर बीच में यहाँ पे टूल बॉक्स आता है, तो उसके लिए हमें क्लिक करना है रीमिक्स पे. हम रीमिक्स पे क्लिक करेंगे. हाँ देखिए, अब यहाँ पे ब्लॉक्स आ गए. ये हमारे टूल बॉक्स है जिसमें ये सारे ब्लॉक्स हैं. हम ये ब्लॉक्स यूज करके आज हमारी कोडिंग करेंगे. ये वर्कस्पेस है. वर्कस्पेस आपकी नोटबुक की तरह होता है. बस नोटबुक में आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप ब्लॉक्स ड्रैग करके कोडिंग करोगे. ठीक है,
अब हम बनाएंगे एक शिप। तो एक शिप कैसी दिखती है, कोई बताएगा? शिप कैसी दिखती है? शिप में कौन होता है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ एक शिप। मैं आज आपको ये एक्टिविटी बना के दिखाऊंगी कि ये शिप कैसी लगती है और उसके अंदर कौन रहता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 डायरेक्शन होते हैं, है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसमें नॉर्थ इज अप, साउथ नीचे की तरफ होता है, ईस्ट राइट की तरफ होता है और वेस्ट लेफ्ट की तरफ होता है। इसलिए यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स पे एरोज मार्क्स दिए गए हैं, जिसको यूज करके, ये एरो मार्क्स को यूज करके हम डायरेक्शंस समझेंगे भी और कंप्यूटर को समझाएंगे भी। ठीक है, सबसे पहला ब्लॉक हमारा होगा सेट कलर। सेट कलर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि सेट कलर से हम पहले एक कलर डिफाइन करेंगे हमारी शिप के लिए। तो हमने ब्लू कलर का डाला। फिर अब हमें ये बॉय चाहिए इस तरफ, ठीक है, ताकि ये यहाँ से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करे। तो मैं करूंगी जंप इस ये डायगोनल की तरफ, वो हो गया जंप साउथ वेस्ट। ठीक है, देखिए अब रब करके। अब हमें यहां से अपनी शिप ड्रॉ करना है, तो मैं लूंगी रिपीट का ब्लॉक। रिपीट का ब्लॉक तब लेते हैं जब हमें बहुत बार कोई एक चीज को रिपीट करना है, हमें एक बहुत बार चाहिए। तो अब हम इसको रिपीट करेंगे 2 बार। ठीक है, और जंप वेस्ट की तरफ करेंगे ताकि ये हमारा एक साइड आ जाए। देखिए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अभी यहाँ से नीचे की तरफ से लाइन बना के अपना शिप ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो पहले ये ब्लॉक डालेंगे ताकि इसकी पहली लाइन बने। फिर हम रिपीट ब्लॉक लेंगे 4 टाइम्स के लिए और हम अपनी लंबी लाइन बनाएंगे जो है ये इस तरफ से। अब देखिए, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, हमने एक लाइन यहाँ पे ली, फिर हमने 4 बार रिपीट किया, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट करके 4 लाइन एक साथ बनाई। अब हमें देखिए इस तरफ जाना है। इस तरफ का कौन सा ब्लॉक हुआ? इस तरफ का ब्लॉक हुआ ये, है ना? तो ये डालेंगे। देखिए इतना बन गया। अब हमें एक और लंबी लाइन लेनी है, जो अभी हमने 4 बार रिपीट किया। अब हम इसको रिपीट करेंगे 6 बार, क्योंकि हमें 6 बार की लाइन चाहिए। सॉरी, तो 6 बार की लाइन में अब हमें जाना है पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ये एरो लेफ्ट की तरफ जाना है। देखिए हमारी शिप का नीचे का हिस्सा बन गया। अब हमें ये हिस्से के ऊपर का एक फ्लैग बनाना है, क्योंकि हर शिप पे एक फ्लैग होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो बॉय है इसको हम सेंटर की तरफ लाएंगे 2 बार जंप करा के। तो जंप इस तरफ होगा और इस तरफ का एरो है ये, तो इसको हम यहाँ पे 2 बार डालेंगे जंप। ठीक है, अब हमारा कलर फ्लैग का अलग होगा, तो हम सेट कलर लेंगे और अलग कलर डालेंगे फ्लैग के लिए। फिर रिपीट का ब्लॉक लेंगे, क्योंकि रिपीट से हम एक लंबा फ्लैग बना सकते हैं। 4 बार ही बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो ये है ऊपर का, देखिए कैसे बना, बन गया इतना। अब हमें इसका बाकी का फ्लैग का हिस्सा कंप्लीट करना है। तो अब इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए अब हम लेंगे एक ये वाला ब्लॉक और एक अंदर की तरफ का, क्योंकि तभी ये एक ऐसा शेप बनाएगा। देखिए बन गया शेप, ये देखिए बन गया। एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ये खाली आपको ये एरो फॉलो करना है, ये ऐसे और ये ऐसे, आपको खाली एरोस फॉलो करना है। अब ये बनने के बाद हमें ये जो बॉय है इसको यहाँ नीचे लाना है, ताकि हम किसी को बिठा सके शिप में, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक रिपीट ब्लॉक लेंगे जो नीचे की तरफ कूदेगा। ठीक है, और इसमें हम ये लड़के को बिठाएंगे, यहाँ पे साउथ की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गया। और अब हम इसको 2 बार लेफ्ट
राइट की तरफ जंप करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। देखिए आ गया सेंटर में ये लड़का। हाँ इसको सॉरी 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए रीसेट, अब देखिए ऊपर की तरफ आ गया। अब मैं दूंगी ड्रॉ स्टिकर। ड्रॉ स्टिकर से क्या होता है, जो हमें एक पिक्चर डालना है या जो एक कैरेक्टर डालना है, कंप्यूटर उसको ड्रॉ स्टिकर के ब्लॉक से समझता है। तो अब हम एक एरो पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स हैं। हम इस पे पायरेट लेंगे क्योंकि पायरेट बैठता है ना शिप के अंदर, तो हमने एक पायरेट लिया। अब देखिए पायरेट आ गया, बट ये बॉय भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब हमें ये बॉय नहीं चाहिए, हम चाहते कि ये बॉय बाहर चले जाए स्क्रीन के। तो अब हम फिर से रिपीट लेंगे 4 बार, ठीक है, और एक बार ये जंप का ब्लॉक डालेंगे। देखिए राइट की तरफ भिजा देते हैं ना। देखिए चले गया बॉय। अब इससे हमारी शिप भी रेडी हो गई, शिप में पायरेट भी बैठ गया और बॉय भी चले गया। समझ गए सब? देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीनेम करेंगे। रीनेम करके एक नाम डालेंगे, ड्रॉ अ शिप, ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। अब अगर आपको ये आपका जो आपने आज एक एक्टिविटी बनाई वर्कशॉप में, अगर आपको ये शेयर करना है अपने फैमिली से, फ्रेंड से, तो हम ये शेयर का बटन दबाएंगे। यहाँ पे ये जो बटन है ना 4, इनको आप नहीं टच करोगे, आप ना इसको प्रेस करोगे ना यूज करोगे। अब हम सिर्फ एक कॉपी द लिंक पे, ये जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके आपको जहां भेजना है आप उसको खाली पेस्ट कर दोगे। अब मुझे आप लोग को भेजना है तो मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। समझ गए? सर आतिफ सर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So you have shared the link also, right, ma'am? Yes, For sir. the I Google. will share the link also. Okay. So ma'am has showed you the demo, like how to make an application. Okay. And we are also going to share the recording for this. And we have also shared the link. Okay. Ma'am has shared the link. अब ma'am ने आप लोगों को link share किया है, जिसमें पूरा steps दिया हुआ है। तो आप लोग को अगर ये link चाहिए तो ये आप copy करके रख ले, paste कर ले। जब भी आप practice करेंगे, जब भी आप computer के सामने रहेंगे, तो आप इससे practice कर सकते हैं। Just give me a second. I'm so sorry. Yeah. So आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशन बनाना है, कैसे गेम बनाना है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वाला जो मैम ने अभी बनाया एप्लीकेशन, ये कैसे बनाना है, ठीक है। और आपको अगर लॉगिन के लिए पूछेगा तो आपको वहाँ पे लॉगिन विद गूगल करना है। ओके, लॉगिन विद गूगल में आपको आपके पेरेंट का ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। So this was the thing, this was the application. So if you have any doubt, any query, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज अभी मैम से पूछ ले, बिकॉज मैम ऑल्सो हैव टू गो बिकॉज शी हैव टू टेक क्लास, ठीक है। तो मैम अभी है 5-10 मिनट, सो शी विल बी देयर। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क हर टीचर, ओके। शी विल डेफिनेटली असिस्ट यू फॉर द सेम रिलेटेड टू द एप्लीकेशन व्हिच शी हैज जस्ट बिल्ट। आपको या फिर आपके पेरेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप आपके पेरेंट को भी बोल सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। If you don't have any doubt, so I will move ahead. Yeah, so as you can see over here, in 2030, 800 million jobs will be impacted by artificial intelligence, and 85% of jobs that exist today won't exist. ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने मैम के आने से पहले जो मैंने वीडियो प्ले किया था, तो according to that video, it was trying to say कि coding is going to become a future language. So coding एक basically एक language है जिसके जरिए हम लोग communicate करते हैं मशीन से, ठीक है। तो कोडिंग जो है फ्यूचर लैंग्वेज बनने वाला है, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग को मैक्सिमम जो है मशीन से, कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट। इसी कारण से ये कहा है कि कोडिंग इज गोइंग टू बिकम अ फ्यूचर लैंग्वेज। एंड यहाँ पे भी वो चीज डिफाइन किया गया है कि कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कोडिंग का ही क्यों महत्व दिया जा रहा है इतना। व्हाई everyone is talking about coding, why everywhere it is saying about coding, it is because of this thing, because within next 9 years
there will be a lot of job which will be impacted due to AI, that is artificial intelligence and machine learning. And there are a lot of jobs that exist today won't be existing due to the change. Okay, so we also have to be the part of that change. We don't have to be the part of the impact. Okay, we have to be the part of the growth. So if we have to be the part of growth, we need to learn coding. Okay, so मैं आपको एक example देता हूँ. जैसे postman, there used to be a postman who used to deliver like postcard, letters, right, telegram, money orders. But that work has been changed. That work has transformed from this from paperwork, जैसे मतलब लेटर में हम लोग भेजते थे, पेपर में भेजते थे, तो वो अब टेक्निकल में ट्रांसफर हो गया है, राइट, चेंज हो गया है. तो अभी हमें कुछ मैसेज भेजना हो, किसी को पैसे भेजना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं. सो दैट इज अ बिग एग्जांपल ऑफ जॉब चेंज, right? So even we have to be the part of the change, we have to be the part of growth. We don't need to be the part of impact. And if we don't want to be the part of impact, we need to know coding, okay, so that we can also contribute to this change. So now moving ahead, as you can see, there is 12 countries mentioned over here, from South Korea to Australia. So why their names are mentioned, their names are mentioned is because they have introduced coding from a very junior level, that is from the primary and secondary level, right? So they have already introduced coding in the schooling level so that the kids can start making applications and games from a very junior level, right? And yeah, apart from this, they have also started making applications and games, and they have also started making codes, robots. They have put certain tasks, certain codes inside the brain of inside the memory, in fact, in memory of the robot, so that they can complete their task, like bringing the grocery, bringing things from the kitchen, from the room, playing with the kids. So they have already started making those things. So why India should be lacking behind? So India has also introduced, that is as per the new education policy of 2020, India has also integrated coding and analytical thinking from the schooling level. But you don't need to wait for them to implement this, because we have already connected with your school, and once your school is physically starting, we will be there. Your computers will be get updated. You will get an individual system. You will get individual apart from system, you will also get individual IDs, so that and there will be skilled and trained teachers, so that we can explain you, and we can train you, and we can also make you understand what coding is, how to make application, and how to build application, and also publish on Play Store and App Store. Okay, so now moving ahead, as you can see over here, it is showing us vision. So this vision basically is of WhiteHat Jr. So what WhiteHat Jr. wants you to become is, we want you to become as a creator, a small creator of your own. We don't want you to limit yourself as a consumer. So basically, what is a consumer? So consumer is a person who uses something. So we don't deny that we are going to completely going to become a creator, because everyone will be a consumer, that we cannot deny. Right, from the day one till day end, we will be a consumer. But we also want you to become a creator of your own, so that there will be less dependency on others. Right. So there are so many applications. For example, there are so many applications in the mobile phone. Like there are WhatsApp, Facebook, Instagram, that's social sites. Then entertainment, we have Spotify. Then we have YouTube. And for users, we have calculator, we have calendar, we have clock. Right. So there are so many applications available. Like more than 200, 300 applications are available in a single mobile phone of a person. This So there are so many applications available in a mobile phone, but we have never created those applications. We are just simply using it. But one day, if there will be the clock will not working, or the compass is not working, some of the application is not working, so we have to be dependent on some other thing. So rather than that, we can start making our own application, so that the dependency will reduce. So that's what WhiteHat Jr. want. We want you to understand your requirement. We want you to understand your family requirement, your friends, your relatives, your neighbors requirement, and put that requirement on the platform of coding, right, and make applications and game accordingly. You just have to understand the importance, and you have to understand your requirement, your need. Okay, so now moving ahead, as you can see on the screen, it is about WhiteHat Jr. So we are available globally. We are available in US, UK. We are available in Australia, New Zealand, and recently we have tied up with Mexico. And we are also available in our own country, that is India. And we are also the part of the largest ed tech company, that is Byju's. And this is Mr. Karan Bajaj, the face which you can see.
He is Mr. Karan Bajaj. He is the founder of WhiteHat Jr. And yeah, he's the founder of WhiteHat Jr. and he has also been the ex-CEO of Discovery Channel India. Okay, so now over here, as you can see, it is showing as impact of coding. So impact of coding means whenever we do something or whenever we learn something or whenever there is something, some changes, there is certain impact. Like when we go to play cricket, we make centuries, right? We hit boundaries, we hit sixes, we get the medals and World Cups in different platforms. There are different awards, so we get that, right? But apart from that, what we get a mental and a physical growth, right? There is a physical appearance growth. There is a development in our body, personality development in our body. So when we are doing coding, there are also six different things which are getting developed in our brain, even in our life, right? So these are creativity, right? So if we have to present something, it needs to be creative, right? So it enhances our creativity, it enhances our logical and abstract thinking. That means we need, it gives a capability to think out of box, right? Now it also helps us to work. It also helps us to focus and concentrate on our work, right? And also helps us to collaboratively solve the problem. So these are the six attributes which are getting developed in our body, in our physical appearance. These are the impact of coding. So these are the six important things which are getting developed in our brain, right? So now over here, as you can see, there are three kids, right? So one is my first is my. Her age is 9 years. Then is Garvit Sood. Her age is 8 years, and the third one is Hiranya Rajani. Her age is 7 years. So just give me a second. Yeah, I'm so sorry. Yeah, so these are the people, they have achieved a lot. So they have created the applications, right? And they have also published these application on the Play Store and App Store. So they have understood their requirement, they have understood their need, and they have put that requirement and need on the platform of coding so that they can fulfill their requirement. So MyMy has created an anti-bullying app. So उसके स्कूल में उसके जो फ्रेंड्स है, उसके जो क्लासमेट्स है, they used to be very unkind to her. Okay, so what she did, she created an application. So whenever someone is bullying her, or if anyone is teasing her or like unkind to her, so she can press that button. A signal will go to the principal as well as to the teacher so that they can come to the rescue. Garbit Sood has created the application of eye checkup so that he does not need to go to the optical shop or to the technician for eye checkup. He can do the eye checkup by his own. And the third one is Hiranya Rajani. She has created the application for her brother who is not able to speak or listen. Okay, so he was not facing any problem at his home. So, but when he went to the school, when he went to the playground, he started facing problem. Right. So when he started facing problem, he was not able to make himself understand to others. So what Hiranya did, she created an application that is sign language application so that everyone can communicate to her brother, and they also publish these application on the Play Store and App Store so that everyone can use. Right. So there are millions of example of WhiteHat Junior students who have created their application and also they have published on the Play Store as well as on the App Store so that everyone can use. So even you also need to understand your requirement, your need, and you have to put your requirement and your need on the platform of coding, and you have to start working on it so that you can fulfill your requirement and others' requirement also. It will be helpful for others also. Okay. So yeah, so now we will come to the last part of the session, that is question and answer session. So if you have any doubt or if you have any query, please let us know related to the application which ma'am has created or related to the